चलो बेटा, at this stage we almost done with the first part or major part of bonding. Okay, now the next part is about the intermolecular forces. Let's start with the new intermolecular forces. ठीक है बेटा, and you remember intermolecular forces, the force of attraction which is present um, between the molecules, है ना, ऐसे ही ना? So the force of attraction present between the molecules. Take beta, this is called intermolecular force. There are different types of intermolecular forces. Number first is called induced dipole forces. Sorry, number first is called dispersion forces. I'm so sorry. और इसी dispersion forces को हम London forces भी कहते हैं. This is also called London forces. Second, इसी की सब कैटेगरी है dispersion forces की ही. It is called induced dipole forces. इनको हम टेम्पररी डायपोल्स भी कहते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव dipole forces, second category, and the last one is basically the hydrogen bonding. अच्छा, ये जो आपने यहाँ पर कैटेगरी पढ़ी है डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, इन्हीं को हम ओ लेवल्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस कहा करते थे. ठीक है, अब चूंकि हमें इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस इसी कैटेगरी में अलग से पढ़नी है, इसलिए हमने इसको अलग से नाम दिया. कोशिश करें कि वैन डर वाल्स फोर्सेस की जगह नाउ ट्राई टू यूज द टर्म डिस्पर्शन फोर्सेस. ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जनरल कैटेगरी है जिसमें इंड्यूस्ड डायपोल और टेम्पररी डायपोल्स और डिस्पर्शन फोर्सेस सब कुछ आ जाता है. तो मेक श्योर दैट यू यूज द वर्ड डिस्पर्शन फोर्सेस फॉर द वैन डर वाल्स फोर्सेस वाले कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. Okay, this is present in a polar molecule or polar compound, and this is present in all polar compounds. ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, that those compound must contain हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू आइदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो या हाइड्रोजन फ्लोरीन से, NOF. ठीक है, अगर आपके पास इनमें से तीन में से कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट है तो दिस इज बेसिकली the molecule that can undergo or that can go that can have a hydrogen bonding present. ठीक है, clear? So basically अब obviously when we are going to do these in a details, तो हमारे पास ये सारी चीजें बारी बारी क्लियर हो जाएंगी. Let's start with the first one, which is our dispersion forces. कॉन्सेप्ट वही है जो आप ओ लेवल्स में पढ़कर आए हैं फॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस. ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम जो आपने ओ लेवल्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस के लिए पढ़ा है. दैट्स बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट फॉर डिस्पर्जन फोर्सेस. ओके, dispersion forces, it is present
in all molecules due to the presence of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से। तो मुझे बताइए, क्या आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल बता सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इवन आई एम होल्डिंग दिस पेन, सो देयर इज अ डिस्पर्शन फोर्स present between this pen and my finger, but as dispersion forces are very weak, ठीक है, तो हमें फील नहीं होती। क्लियर? सो सेकंड पॉइंट हमारा यही होगा कि इट इज द वीकेस्ट intermolecular force. And only important when no other force of attraction is present. ठीक बेटा, इट इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हर जगह मौजूद होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कब होगी? जब कोई फोर्स, दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट ना हो। इसलिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि इवन noble gases have weak dispersion forces present. Clear? All non-polar molecules only have dispersion forces. ठीक है, they only have only one intermolecular force which is the dispersion force. ठीक है, याद रखिएगा, the physical properties like melting point or boiling point depends on extent of dispersion forces. ठीक है, और ये स्टेटमेंट मैंने दिया है सिर्फ किसके लिए? टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। बोले बेटा? पोलर में डायपोल डायपोल फोर्सेस भी होती है। ठीक है, अब देखें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। पोलर कंपाउंड्स हैव डिस्पर्जन फोर्सेस, वो तो हर जगह होती है, इवन नोबल गैसेस में भी होती हैं। जहां भी आपके पास whenever you have electrons present, you have a dispersion forces present, but dispersion forces are only important when there is no other force of attraction present. So in a polar molecule, you have a stronger force of attraction present, which is called the dipole-dipole forces. So van der Waals ये dispersion forces होती जरूर हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, उससे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। ठीक है, क्लियर? सो इसीलिए हम सिर्फ नॉन पोलर में इनको कंसिडर करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पर, इफ आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, if you have a higher MR, it means that this molecule have more electrons present. Agreed? More electrons present का मतलब it should have stronger dispersion forces. Means ये मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ठीक है, सो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट और एनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कंपेयर करनी है, तो मेक श्योर दैट यू नो दैट हायर एमआर मींस मोर इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस का मतलब यह है कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और बात करते हैं।
You know that fluorine gas, chlorine gas, bromine liquid, iodine solid. The reason behind the different physical state of halogen, ये सारे halogen है ना, ठीक है? अब मुझे बताओ कि F2 is a polar molecule or a non-polar molecule? F2. There are two conditions for any molecule being a polar molecule. It must contain a polar covalent bond. क्या फ्लोरीन के साथ polar covalent bond है? There's no difference of electronegativity present. So this is a typical non-polar covalent bond. So all these are the non-polar molecules. याद रखिएगा diatomic molecules can never be polar. ठीक है, जो भी आपके diatomic molecules होते हैं वो कभी भी polar नहीं हो सकते because same elements में there is no difference of electronegativity present. ठीक है, so they are all non-polar. ये तो हमें पता चल गया. If they are non-polar, it means that their physical state या boiling point depend करेगा किसके ऊपर? Extent of dispersion forces के ऊपर. Can I say that going down the group, as the MR increases, होने की वजह से number of electrons increases, जिसकी वजह से dispersion forces increases, and because of which you have different physical state. Physical state gas से liquid और liquid से solid हो जाएगी. ठीक है बेटा, this is basically the reason behind the different physical state of halogen. नहीं, other क्लास में रखी देखें, dispersion forces they are present in every molecule, but they are only important when there's no other force of attraction is present. They're the weakest intermolecular force. So a typical non-polar molecule do not have any other intermolecular force present rather than dispersion forces. And dispersion forces depends on the number of electrons. Electrons का मतलब MR. If you have a higher MR, more electron, more dispersion forces. और जितनी ज्यादा dispersion forces होगी उतनी ज्यादा आपके पास physical properties change होंगी, यानी boiling point change होगा. So can I say that indirectly आपके पास जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके एमआर पे डिपेंड करता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मींस फिजिकल स्टेट भी उसी में कवर अप हो जाती है. Another example, if I ask you between hydrogen gas and nitrogen gas, and if I ask you which one of these gas should have a higher boiling point, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क अबाउट देयर पोलैरिटी. Either both are polar, both are non-polar, or one polar, one non-polar. क्या केस है? Both are non-polar. Diatomic molecules are all non-polar. ठीक है? If both are non-polar, then think about their MR. Their MR, the MR of hydrogen is 2 and the MR of nitrogen is 28. So किसका boiling point ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का boiling point ज्यादा होगा. ठीक है? Why? Because nitrogen have a larger, higher MR, more electron, more dispersion forces. ठीक है? So typical non-polar molecules में the boiling point depends on the extent of dispersion forces. Done it? Higher MR. ठीक है बेटा. Next one is basically called the induced dipole forces. इनको हम temporary dipoles भी कहते हैं.
You remember from O levels, test for the presence of alkene. Add bromine water, it decolorize. Add bromine, it decolorize. Remember? हाँ, वो decolorize हो जाता है. Remember ना? याद है वो? देखिए. और आपको ये भी पता है कि if I draw a typical alkene molecule, carbon double bond carbon, ethene draw करूं अगर मैं, सही है? And we know that in this ethene, आपके पास in every single covalent bond have two electron, यानी कार्बन हाइड्रोजन में how many electrons? You have two electrons. You have two electrons here. You have two electrons here. Two here. In this region, you have how many electrons? Middle region में 4 electrons. So can I say that this is a region where you have a large electron density present? ये highly negative region है इस molecule का, ठीक है? अच्छा, पहली बात. दूसरी बात ये, you remember that bromine is a typical non-polar molecule. There's no partial charges, है ना? Equal sharing of electron because the electronegativity of both bromine are same. So जब आपने इस bromine को इस alkene में add किया, as bromine molecule come close to this high electron rich environment, because of repulsion, these bonded pair of electrons slightly move towards one bromine, making this bromine partial negative and this one is partial positive. क्या हुआ? Poles create हो गए, dipoles create हो गए, but these dipoles are created because of a certain chemical environment. So these are called temporary dipoles or induced dipoles. These dipoles are getting induced. Induction का मतलब समझते हैं ना? तो ये dipoles induced हुए हैं because of this alkene. As bromine move away from this alkene, non-polar होगा. जैसे ही alkene के पास आएगा, polar बन जाएगा. ठीक है? So the force of attraction present because of these induced dipole is called because of these temporary dipoles is called induced dipole forces. ठीक है? तो ऐसा और कोई भी ब्रोमीन और आपके पास होगा. Let's suppose you have another bromine here, ठीक है? Which with the same partial positive and partial negative charges, इनके दरमियान जो force of attraction create होगी, इसको भी आप induced dipole forces कहेंगे. ठीक है? तो this is called induced dipole forces. ठीक है? टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं. क्लियर? And they are only present in all non-polar molecules और non-polar compound. क्योंकि आपके पास जो polar molecules होंगे उनमें तो permanent dipoles होते हैं ना, वहां तो इसकी जरूरत ही नहीं है. Now the first point, induced dipole forces are present in any non-polar molecule due to the presence of due to a certain chemical environment. ठीक है बेटा, ड्यू टू अ सर्टेन केमिकल एनवायरनमेंट. ये भी नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल always have dispersion forces. ठीक है? और induced dipole या temporary dipoles could be present if you add them into any electron rich chemical environment, and this bromine is the most common example of this particular case. ठीक है? क्लियर है? इसमें तो कोई मसला नहीं है. बस एक की पॉइंट याद रखिएगा कि induced dipole forces are stronger than normal dispersion forces. ठीक है बेटा? So
If I ask you that you have Br2 in a liquid form, which intermolecular forces could be present in bromine? तो आप बोलेंगे dispersion forces और induced dipole forces. ठीक है, दोनों present होते हैं. Induced dipole forces को temporary dipoles भी कह सकते हैं, instantaneous dipole भी कह सकते हैं. हाँ? नहीं, between two bromine molecules, because we are talking about the intermolecular force, the force of attraction present. देखिए, if anything is in a gas form, liquid form, solid form, there must be a force of attraction present between the molecule. That's why the state is a liquid state. Force of attraction. If you break all the force of attraction present between two molecules, the final physical state is a gaseous state. जैसे जैसे ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती रहती हैं, तो फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड. जैसे हमारे पास हैलोजन में हो फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड, बिकॉज आयोडीन का एमआर बहुत ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट. ठीक है, क्लियर. सो ब्रोमीन में आपके पास दोनों तरह की फोर्सेस प्रेजेंट होंगी. यू हैव डिस्पर्शन फोर्सेस फॉर श्योर, ये तो हर जगह होती हैं. ठीक है, और इस कुड बी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस प्रोवाइडेड कि आपके पास ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज द सेकंड कैटेगरी व्हिच इज अ डायपोल फोर्सेस. हम इसको डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं. आसान है, इजी इसलिए है कि इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि दिस इज प्रेजेंट इन ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल पोलर मॉलिक्यूल. डायपोल डायपोल फोर्सेस, और सिर्फ डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट डायपोल फोर्सेस. परमानेंट डायपोल फोर्सेस. ठीक है बेटा. Now you know that, let's suppose I've taken example of a HCl molecule. पहले तो मुझे बताइए कि I hope कि you understand that HCl molecule is a typical polar covalent bond, hydrogen with chlorine. ठीक है. In a similar way, you have another HCl molecule in the system with the same partial positive and partial negative charges, and the force of attraction present between these two molecules because of these opposite charges is called dipole dipole forces. या सिर्फ डायपोल फोर्सेस भी आप इसे कह सकते हैं. ठीक है बेटा. की पॉइंट ये है that the dipole forces are stronger than dispersion forces. That's why polar molecules always have a higher boiling point. ठीक है. So that's why polar molecules always have higher boiling point, because these forces are stronger. So as an example, if I ask you, we have nitrogen gas and you have HCl ले लेते हैं. ठीक है. Which one should have a higher boiling point? तो आप सबसे पहले चेक करेंगे difference of polarity. So you can see this one is a non-polar and HCl is a polar. You know the list of a polar. And polar molecule have dipole forces and dipole forces are stronger. ठीक है. So इसका boiling point higher.
ठीक है बेटा, that's how you have to compare. Between two non-polar, MR ज्यादा, boiling point ज्यादा. Between a polar and a non-polar, polar molecule always have a higher boiling point. Now, last intermolecular force, which is the third one, is a hydrogen bonding. ठीक है? Hydrogen bonding is very specific and it is only present in a molecule, polar molecule, in which hydrogen is directly bonded to either nitrogen, either oxygen, और either fluorine. ठीक है, तो आपने ये तीन बॉन्ड्स याद रखने हैं. क्लियर? NOF, either nitrogen, either oxygen, or either fluorine. ठीक है? It is the strongest intermolecular force. It is present only in those polar molecules in which hydrogen, nitrogen, hydrogen, oxygen, or hydrogen fluorine bond is present. ठीक है? Hydrogen bonded molecule have a higher boiling point. ठीक है? Hydrogen bonded molecule का boiling point is always higher. It is present सबसे ज्यादा, highest, जितने भी polar hydrogen bonded molecule have the highest volume. ठीक है? It is present between the lone pair of one molecule and partial positive hydrogen of other molecule. ठीक है, +8 नहीं है, this is basically the partial, सही है, partial positive hydrogen of the other molecule. ठीक है? Let's suppose if I have to draw the hydrogen bonding in ammonia, you know that nitrogen being group 5 member, making 3 covalent bond with 3 hydrogen, having 1 lone pair of electrons. Okay, now we have nitrogen. You remember the shape of NH3? That's a pyramidal shape. Hydrogen, hydrogen, and then hydrogen. Bond angle is 107. Lone pair of electron, and then this is partial negative. Okay, this is a typical ammonia molecule. एक ऐसे ही और अमोनिया मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं. हाइड्रोजन, this is partial positive, partial positive, positive, and this is partial negative. Now the hydrogen bonding is basically between this lone pair
and of one molecule, lone pair of one molecule and partial positive hydrogen of the other molecule. This is basically called the hydrogen bonding. इसको आप mark करेंगे. Mark with this yellow. This is hydrogen bond. ठीक है बेटा, and you have to how you should draw this hydrogen bonding. It's very important कि hydrogen bonding आपको draw करनी अच्छे तरीके से आनी चाहिए. Clear? In a similar way, the next example is H2O. You know that H2O, oxygen have two lone pair of electrons. Hydrogen bonding in water molecule. Now, I'm going to draw one water molecule here. Hydrogen, the shape is non-linear, the bond angle is 104.5. I'm going to draw three water molecules for some reason. सही है? All these hydrogens are partial positive, oxygen is partial negative. How many lone pairs are there on oxygen? कितने lone pair हैं? तो per molecule water is making two hydrogen bond. Per molecule कितने hydrogen bond बनाएगा? दो. Partial positive, partial negative, partial positive. And I'm going to represent the hydrogen bonding with a green. Okay? This is basically the hydrogen bonding in water. ठीक है जी, ड्रॉ हो गया. अब एक बात का आंसर कीजिए. देखिए, यू कैन सी ऑन द बोर्ड अमोनिया एंड वाटर. ठीक है, दोनों पोलर है एंड बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट. ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? व्हाई? यस, बेसिकली देखो, ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हैं, ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, बट हम किसी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो काउंट करते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए जो उसका लोन पेयर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो इन अ वाटर मॉलिक्यूल यू कैन सी पर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. But in ammonia per molecule, how many hydrogen bonds are formed? One. So the extent of hydrogen bonding is double in H2O and it's half in. ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है. देखिए, क्वेश्चन ये है कि NH3 and H2O. Look at the comparison. Both are polar. दोनों पोलर हैं. दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. MR of ammonia is 17. The MR of H2O is 18. डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस यहां आ रहा है कि अमोनिया इज अ गैस बट वाटर इज अ लिक्विड. ठीक है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि इन H2O पर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन और बॉन्ड्स आर फॉर्म. ड्यू टू टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन.
हम्म। इसके बाकी हाइड्रोजन भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन वो इस मॉलिक्यूल की काउंट नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम काउंट करते हैं कि एक एक सेंट्रल एटम हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन मेकिंग हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, वन। द अदर केस सेंट्रल एटम वाटर में कौन क्या है, ऑक्सीजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू check it. And the last case is hydrogen bonding in ethanol, C2H5OH. All alcohols have a hydrogen bonding present. Organic compound में alcohol and carboxylic acid are the two type of organic compounds that have a hydrogen bonding present. ठीक है बेटा, सो आई एम गोइंग टू डू इट सेम। देखो, सिमिलर वाटर वाला ही केस होगा। यू हैव टू ड्रॉ वन ऑक्सीजन with two lone pair, draw one hydrogen here. On this side वाटर में हाइड्रोजन होता था, यहां पे आप C2H5 लिख दीजिए, ठीक है। दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। इन अ सिमिलर वे एक और हाइड्रोजन और यहां लगा दीजिए C2H5, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां भी हाइड्रोजन, C2H5. This is partial positive and this is partial negative. You got it? Same. Exactly the same, बस एक साइड पे वाटर की जगह पर, वाटर में हाइड्रोजन की जगह आपने C2H5 लगा दिया। This is basically the hydrogen bonding in alcohol or in ethanol. C2, हाँ नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है बिटवीन वाटर एंड इथेनॉल, अगर वो आपसे पूछ लेता है ड्रॉ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड इथेनॉल, तो आप एक इथेनॉल बना दीजिए, दो वाटर बना दीजिए, दो इथेनॉल बना दीजिए, एक वाटर बना दीजिए, इट्स अप टू यू। सही है। सो दिस इज बेसिकली दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, सो जस्ट क्विकली मैं कुछ चीजों को सम अप कर रहा हूँ जस्ट एज अ रिमाइंडर, एंड वी डन विद दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर एज वेल। सो फोकस कीजिए एंड देन जस्ट हैव अ फाइनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सम अप कीजिए। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर टुडे। So intermolecular forces are basically the force of attraction present between the molecules. ठीक है, all the physical properties of a covalent compound, simple covalent compound, depends on the extent of dispersion of intermolecular forces. ठीक है, physical properties का मतलब simple covalent compound का boiling point, melting point, physical state depends on the intermolecular forces. Intermolecular forces could be a simple van der Waals like the dispersion forces या induced dipole forces. It could be dipole-dipole forces or a hydrogen bond. Dispersion forces only can be present in any molecule where you have electrons present, but they are only important जहां कोई और force of attraction ना हो। तो typical non-polar molecules के सारी physical properties depend करती हैं dispersion forces के ऊपर। जैसे जैसे dispersion forces बढ़ेंगी boiling point बढ़ता रहेगा, और dispersion forces बढ़ती हैं electrons बढ़ने से, और electron बढ़ते हैं MR बढ़ने से। ठीक है, तो if you have to compare the boiling point of two non-polar molecules, सिर्फ आप ये देखेंगे किसका MR ज्यादा है, जिसका MR ज्यादा है उसकी dispersion forces ज्यादा और higher boiling point. Induced dipole forces could be present in any non-polar molecule due to the presence of any certain electron rich environment. जैसे आप ब्रोमीन को जब एल्कीन में ऐड करते हैं तो आपके पास जो है वो टेम्परेरी डायपोल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्रिएट होती हैं, और ये किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। एनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव डिस्पर्जन फोर्सेस, could have a temporary dipole forces कि अगर आप उसे ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। डायपोल डायपोल फोर्सेस के लिए द पोलर मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल का। It must contain a polar covalent bond and the shape must be non-symmetrical. Non-symmetrical shape दो reasons की वजह से होती है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो या डिफरेंट एटम्स अटैच हो। प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
So yes, HCl and nitrogen, HCl is polar, डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा. उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जाए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, HF HCl सॉरी NH हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन NOF. तो अमोनिया में भी होती है, वाटर में भी होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में यस अल्कोहल्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिएगा, अल्कोहल एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड. ठीक है, और इस तरह से ड्रॉ करने के लिए फॉर श्योर आएगी एग्जाम में. एंड यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, कॉमन केस है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर में और अल्कोहल में इथेनॉल की जो मैंने एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा कि इफ यू हैव टू शो टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपको मिनिमम हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू हैव टू ड्रॉ, 3 मॉलिक्यूल, वरना तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो ही नहीं कर सकेंगे. ये पेयर अप करके ड्रॉ करना गलत हो जाएगा. आपने एक वाटर मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी. ये डायमर यानी 2 मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर Al2CL6 वाला केस नहीं है. तो आपने 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है. दैट्स हाउ. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद फाइनली वी डन विद द केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आपने देखा कि काफी ज्यादा टाइम लिया. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक क्लास की थी. ठीक है, लेट्स सी के हाउ दे आस्किंग दीज इन एग्जाम. कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं रिमेनिंग टाइम में. नहीं नहीं, देखो, ब्रोमीन में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिटवीन टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इज अ डिस्पर्जन फोर्स. नहीं, मतलब जब भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, whatever the molecules you have, whenever you have 2 different molecules or a similar molecule, there must be a force of attraction present between them. और वो force of attraction कौन सी होगी? Because of electron, as this is a non-polar, तो इसके पास ये dispersion forces होंगी. If it would be a polar molecule, then dipole forces होंगी. The intermolecular forces are always present between the molecule. Change नहीं, no reaction. देखो, if this is a water, ठीक है ना, ये वाटर है आपके पास, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. व्हाई इट इज इन लिक्विड फॉर्म? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जिसने उसे लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है. ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होने की वजह से वाटर जो है वो आपके पास इट्स इन अ लिक्विड फॉर्म, अदरवाइज वाटर को गैस फॉर्म में होना चाहिए था. नाउ दिस इज द केस. देखें, बहुत सिंपल सा केस है. You can see which compound would be the most volatile. Volatile term समझ में आती है? Anything that can evaporate at low temperature, room temperature पे, यानी बिल्कुल इसका जो है वो स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. ठीक है ना? स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखें, यू कैन सी CHO. नहीं नहीं नहीं, पोलैरिटी का डिफरेंस. NH2, you can see OH. So both of these must have a hydrogen bond present. ठीक है ना? इसमें आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है. This one is polar and this is a typical hydrocarbon. All hydrocarbons are typical non-polar molecule, and non-polar molecule होने की वजह से they only have dispersion forces present, and dispersion forces are the weakest force of attraction. That's why A option आपके पास होगा जो most volatile होगा. हाइड्रोकार्बन सारे volatile होते हैं. ठीक है, क्लियर? अब मुझे जरा बताइए यहाँ पे, which of the following molecule has no permanent dipoles? No permanent dipoles यानी polarity. देखें, all of these molecules have a polar covalent bond present, है ना? कार्बन का हेलोजन के साथ polar covalent bond है. अब मैं जरा इनकी शेप बना देता हूं. This one is carbon with 2 chlorines and 2 fluorine. All these bonds are the polar covalent bond. But I say that this is a polar molecule. Why? Because the shape is non-symmetrical. है ना? 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं. नॉन सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इसके पास परमानेंट डायपोल्स होंगे. ये एक पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव परमानेंट डायपोल्स. अभी हमने यही बात लेक्चर में पढ़ी है. इन दिस वन यू हैव C with 3 chlorines and 1 hydrogen. यहां भी शेप नॉन सिमेट्रिकल. In this one, you have carbon double covalent bond carbon with 1 chlorine, 1 chlorine, 1 chlorine, 1 chlorine. You can see the shape is
symmetrical. So इसमें dipole moment get cancelled out and this molecule do not contain any dipoles. तो ये typical non-polar molecule की तरह behave करेगा because the polarity gets cancelled out. Okay, okay, okay. Okay, question number 14. It says there's a small lizard climb करती है smooth glass surface पे, ठीक है, millions of microscopic hairs on its toes, ठीक है, और ये hairs जब आप रखते हैं तो एक force of attraction create होती है between the glass, ठीक है, और इस lizard के toe pads के दरमियान आप बताइए कि वो कौन सी force of attraction है जो create होती है. क्या वो coordinate covalent bonding है, either it's a covalent bonding, ionic bonding या van der Waals forces. टेम्परेरी डायपोल्स, डिस्पर्जन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस. ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है. सो एज ए सेट के वैन डर वाल्स फोर्सेस या जिसको हम डिस्पर्जन फोर्सेस कह रहे हैं, ओल्ड एज क्वेश्चन है, न्यू में डिस्पर्जन लिखा हुआ होगा या इंड्यूस्ड डायपोल लिखा हुआ होगा. These forces are always present. As I said, कि whenever I'm holding this pen, is induced dipole forces or dispersion forces. एक ही बात है. हाँ, वो दो ऑप्शंस एक साथ कभी भी नहीं गिवन होंगे, ठीक है. नाउ दिस वन, question number 16. The diagram shows the variation of the boiling point of the hydrogen halide HCl, HBr, HI, HF. What explains the higher boiling point of hydrogen fluoride? सबसे ज्यादा किसका है? HF. They're asking why HF has this much difference in the boiling point. Why HF have the highest boiling point? Sorry, man. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन तीन एलिमेंट्स में होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. So yes, the answer is D. It's a hydrogen bonded molecule. Strongest intermolecular force, highest boiling point. ठीक है? आप हैंडल कर पा रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के क्वेश्चन? अब देख रहे हैं, a good revision is required and you can easily handle it. Which of these the boiling point is influenced by the hydrogen bonding? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये है कि यू डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स राइट नाउ, ठीक है ना. तो मैं इनके डिस्प्लेड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है. ये CH3 तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं. ये CHO बेसिकली ये होता है C डबल बॉन्ड OH. क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इज इट पॉसिबल टू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो. नो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, है ना? नहीं है ना? ओके, गुड. दिस वन इज CH3O CH3. No oxygen hydrogen bond is there. This one is H C double bond OH. Last wala is H C double bond OCH3. Which one you can see the OH bond? C may you can see it. C is a typical carboxylic acid, and because of this you have a hydrogen bonding present. Okay, clear? So that's how you have to pick the one in which you have a hydrogen bonding present. Now 19. In which process are hydrogen bonds broken? A, when hydrogen liquid से hydrogen gas में जा रहा है, कौन सी force of attraction break होगी? Van der Waals dispersion forces? So no. B में अमोनिया लिक्विड से अमोनिया गैस में जा रहा है. अमोनिया में which intermolecular force is present in ammonia? वही कौन? अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 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 NH3. अभी ड्रॉ किया है NH3 NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. सो अमोनिया इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास ब्रेक होंगे, ठीक है. HCl में तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, C ऑप्शन में, D ऑप्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के, ठीक है. सो B इज ऑप्शन. वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, all these and a carboxylic acid, they all have a hydrogen bonding present, ठीक है. 24.
Hydrogen bonding can occur between molecule of methanol and a molecule of Y. What could be the molecule of Y? methanol में तो आपके पास, अब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? मिथेनॉल को छोड़ दें, इन 4 ऑप्शंस में से विच मॉलिक्यूल कैन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड? ए, विच इज एन अल्कोहल. ऑल अल्कोहल कैन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आगे सोचने की जरूरत भी हमें नहीं है. Although I know that at this stage you can't solve these type of question until you know the structure. Organic करने के बाद आराम से सॉल्व हो जाएंगे. ओके, ये देख लेते हैं 28. Which pair of element have bonds of the same type between their atoms in solid state? जैसे मेटल्स में सॉलिड स्टेट में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है. इन नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी बॉन्डिंग है. वैसे नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्डिंग ही आपके पास होती है, दे आर इन सॉलिड फॉर्म, या डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं. सो इफ यू हैव एल्युमिनियम व्हिच इज अ मेटल एंड नॉन मेटल, दे डोंट हैव सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट, ठीक है. क्लोरीन विद आर्गन, नहीं. क्लोरीन कोवेलेंट है, आर्गन नोबल गैस है. मैग्नीशियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, या मेटल ही कह सकते हैं इसे, जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. सो डी इज द ऑप्शन इन विच यू हैव अ टिपिकल नॉन पोलर सल्फर विद अ टिपिकल नॉन पोलर क्लोरीन. सिमिलर टाइप ऑफ पोलैरिटी, सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए 29. थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ध्यान में रखिएगा. Which element is expected to show the greatest tendency to form some covalent compound? They all are metals. इन मेटल्स में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है टू मेक अ कोवेलेंट कंपाउंड? देखिए, इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर देखें, पहले सुनते हैं. चलो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है? लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटल्स होते हैं, राइट साइड पे आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं. एग्रीड? तो कैन आई से दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर. तो इन सब में से जो आपके पास मेटल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मस्ट हैव मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सो राइट साइड पे कौन सा होगा? राइट साइड पे होगा आपके पास ए. और कहां से हिंट मिल रहा है? यू रिमेंबर Al2Cl6 आपने बनाया था बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोवलेंट याद है ना? तो एल्युमिनियम क्योंकि ग्रुप 3 में है, देखें कैल्शियम ग्रुप 2 में है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में, सोडियम ग्रुप 1 में है. राइट साइड पे कौन सा सबसे ज्यादा है? एल्युमिनियम, व्हिच इज इन अ ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो इट हैज मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और इसकी वजह से इसके कंपाउंड जो है वो कोवलेंट बनने के चांसेस हैं. ठीक है बेटा. अच्छा, ये अब क्वेश्चन इसमें ज्यादातर मोरलेस हमारे काफी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए ड्यूरिंग ऑब्वियसली, and then you have to revise it. In which statement can be explained by intermolecular forces hydrogen bonding? Butane is hydrocarbon, dispersion forces, has a higher boiling point than propane. Propane is a hydrocarbon. क्या हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नो. तो ये तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता ना. एमआर का डिफरेंस है, दोनों नॉन पोलर है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड form an acidic solution when dissolved in water. HBr में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. SiH4 has a higher boiling point than CH4. SiH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Remember NOF. Water has a higher boiling point than CH4. Water में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू हैंडल, बट इफ यू शुड नो दैट दिस NOF के नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है. Now it's up to you to complete these worksheet or revise the bonding. Do this worksheet. I'm sure that you can easily solve it. इतना कोई मुश्किल नहीं है. There are some questions that might create a problem, but we will discuss it later.
Which of these molecules have the highest boiling point? बोल. Yeah, OH bond is there. Okay, so we're just keeping it till here. We're done with the bonding, and then we'll do the next chapter, inshallah, next class. सबसे ज्यादा lengthy chapter है. We're done with the lengthiest chapters now.